We'll see about passive transport, types of passive transport, how this passive transport happens in our body, and what are their medical significance, and what are their mechanism, how they work. It's all about the. Here we will try to understand, just trying to get some basic idea about passive transport. And transport is their types are this. First one is a simple diffusion, osmosis, facilitated filtration, and facilitated diffusion. These are the types of passive transport. In passive transport, it's happen down to the concentration gradient. It's the transport happen down to the concentration gradient. Means movements of molecules from goes from higher concentration to lower concentration gradient. No energy required for this transport. In the passive transport, energy requirement, there's no energy requirement for transport process, and the carrier protein not requirement. And also the in the passive transport, we can say to carrier protein in passive transport, the carrier protein is not required for the transport process. First one is a simple diffusion. Simple diffusion is a simple diffusion movement of molecule from the higher concentration to lower concentration, just according to the concentration gradient. This is a simple diffusion. In simple diffusion mechanism, simple diffusion mechanism, so first of is that lipid soluble. Simple diffusion mechanism or simple diffusion, first one is lipid soluble, second one is the ion channel. In lipid solution there is a membrane, and is a here lipids molecule cross the in lipid soluble में here the lipid molecule cross the membrane by simple concentration gradient. तो lipid molecule होते हैं वो हमारे सेल membrane जो membrane होते हैं उसको simple diffusion के द्वारा क्रॉस करते हैं. And we also know that our membrane is made of lipids molecule. Here the lipids molecule and it's lipid soluble, and only the lipid molecules can be cross this barrier membrane. And second are the ion channels. Here diffusion happens through the ion channel. In ion channels, the diffusion process through diffusion happens through the ion channel. This ion channel helps in diffusion. They are the higher concentration of sodium molecules cross this membrane with the channel with the help of channel, and enter into the inside of the cell. There is the inside and there is the outside. Outside the concentration is high, and the inside of the cell the sodium concentration is low. So this due to this concentration gradient, the sodium molecule easily uh, cross membrane by the channel ion channels. So in ion channels, in ion channels there are two types: voltage gated channels and the ligand gated. This channel can be two types, or that divided into two types: voltage gated and the ligand gated. On open and on open and closing of channels is dependent when the open and closing of channel depended on the charge developed across the membrane. इन वोल्टेज गेटेड चैनल में क्या होता है कि जो चैनल्स का जो ओपन एंड क्लोजिंग होना, उसके जो मेम्ब्रेन के जो चार्ज डेवलप हो चार्ज उसके जो मेम्ब्रेन के चार मेम्ब्रेन के ऊपर मेम्ब्रेन में जो चार्ज डेवलप होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, जब उसको बोलते हैं वोल्टेज गेटेड. एंड लिगेंड गेटेड में सेकंड इज द लिगेंड गेटेड. एंड सेकंड लिगेंड गेटेड में क्या होता है, व्हेन क्लोजिंग एंड ओपनिंग closing closing and open gate to the channel is dependent on chemical like acetylcholine and glutamide. When the ligand the closing and open and close होना जो गेट का जो ओपन एंड क्लोजिंग जो डिपेंड करता है केमिकल्स पे जब डिपेंड करता है उसको बोलते हैं लिगेंड गेटेड. वेयर द एंड लिगेंड गेटेड में क्या होता है, जब ये जो केमिकल्स होते हैं ये जब
गेट्स के कुछ स्पेसिफिक से अटैच जब ये अटा बाइंड्स होंगे गेट्स में, फिर देन द प्रोसेस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस विल हैपन, उसके बाद ही ट्रांसपोर्ट प्रोसेस जो है शुरू होता है. एंड क्लिनिकल मीन्स clinical significance of simple diffusion. First is the um, first is the mutation in the chlorine channel. In the when mutation in the CFT cytocystic fibrosis transmembrane conductance regulator. If in the mutation in the CTRF genes causes the defect on chloride channel, which cause the cystic fibrosis. Cystic fibrosis होता है ड्यू टू द क्लोरीन म्यूटेशन इन क्लोरीन चैनल में जब अगर म्यूटेशन होता है तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है बॉडी में. एंड द सेकंड इज द वेरियस ड्रग विच इज यूज इन हाइपरटेंशन डायबिटीज विच इफेक्ट द आयन चैनल. जो वेरियस ड्रग्स होते हैं जो हेल्प करते हैं यूज होते हैं इन टेंशन एंड hypertension like situation and diabetes, they affect these ion channels. And its example is sulfonyl urease. Sulfonyl is a oral antibiotic drugs which is used in sulfonyl urease is a oral drugs antibiotic drugs which is used in treatment of diabetes. It cause a closure of पोटेंशियम चैनल. जब पोटेंशियम चैनल के क्लोज को पोटेंशियम चैनल को क्लोज कर देता है. तो जो हमारा जो इसके थ्रू ये अफेक्ट करता है आयन चैनल को. एंड नेक्स्ट इज फैसिलेटेड डिफ्यूजन.